Hello, good afternoon, everyone. Hi, this is Tanu Virmani from babycode IELTS. So, in today's session, we will discuss what is speaking module. Speaking module क्या होता है? We will discuss about what are the parts of speaking module, how to understand speaking module in detail, and the three different parts. Later on, we will see the speaking band descriptors also. That means how your speaking is evaluated. Okay. So let's start our today's session. What is speaking module? Speaking module, basically the speaking test, they assess your proficiency in spoken English. कि आपको English कितने अच्छे से बोलने आती है, आपकी speaking को यहाँ पे evaluate किया जाता है. Speaking test, it remains same for both your academic as well as general training. ये दोनों केसेस में सेम होता है. इट इज नॉट सेपरेट. अगर आप एकेडमिक में स्पीकिंग टेस्ट दे रहे हो तब भी सेम रहेगा और जनरल में भी सेम. इट इज कंडक्टेड फेस टू फेस विद द ट्रेन्ड आईएलटीएस एग्जामिनर. दैट मीन्स ये 1-on-1 होता है एंड इट इज रिकॉर्डेड ऑल्सो. द स्पीकिंग टेस्ट आर रिकॉर्डेड. Academic speaking test or general speaking test is made up of 3 parts. ये 3 parts में divided है and it takes approximately 11 to 15 minutes. That means आपका speaking test 11 to 15 minutes के लिए होता है. Now speaking test, it may be conducted on the same day as other tests or a week before or after the other test. अब या तो ये same day पर होता है जैसे बाकी टेस्ट होते हैं, या फिर वीक बिफोर होता है या वीक आफ्टर होता है. राइट. नेक्स्ट, देयर आर 3 टास्क इन योर स्पीकिंग. आपके 3 टास्क होते हैं स्पीकिंग में. दैट मीन्स देयर आर 3 पार्ट्स. द फर्स्ट टास्क इज इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू. जो आपका पार्ट 1 होता है स्पीकिंग का, उसमें आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है. इट्स अ काइंड ऑफ एन इंटरव्यू ऑल्सो. टास्क 2 इज लॉन्ग टर्म, जिसको हम क्यू का टॉपिक कहते हैं. एंड टास्क 3 इज अ डिस्कशन राउंड. लेट्स सी ऑल दीज 3 इन डिटेल. सो एज आई टोल्ड यू, देयर आर 3 पार्ट्स टू द स्पीकिंग टेस्ट. पार्ट 1 क्या होता है? पार्ट 1 विल आस्क यू जनरल क्वेश्चंस. ये आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसमें एग्जामिनर आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछेगा अबाउट योरसेल्फ, आपसे रिलेटेड, राइट. एंड अ रेंज ऑफ फेमिलियर टॉपिक्स. फेमिलियर टॉपिक्स पूछे जाते हैं यहाँ पे. ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसके बारे में यू कांट आंसर. इवन थ्रू आउट योर स्पीकिंग टेस्ट, इसमें ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसका आप आंसर ना दे सको, राइट. So those familiar questions, those familiar topics can be about home, family, work, studies, any of your likes, your dislike. And this part will be for 4 to 5 minutes. So part 1 आपका 4 to 5 minutes के लिए होता है. नेक्स्ट इज योर पार्ट 2. पार्ट 2 में क्या होता है? पार्ट 2 यू विल बी गिवन अ टास्क कार्ड. इसमें आपको एक टास्क कार्ड दिया जाता है, कार्ड दिया जाएगा और एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस टॉपिक के बारे में कुछ स्पीक करो. यू हैव टू टॉक अबाउट इट. सो इसमें आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है टू प्रिपेयर फॉर इट. स्पीक करने से पहले आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा एंड देन यू हैव टू स्पीक फॉर अप टू 2 minutes. So we advise you that you have to speak for 2 minutes, not less than 2 minutes. Now, examiner, once you have completed your 2 minutes, he will ask you 1 or 2 questions on the same topic so that he can finish the part 2. So this round is also for 3 to 4 minutes. Then comes your part 3. Part 3, here the examiner will ask you further questions जो किससे कनेक्टेड होते हैं? पार्ट 2 से कनेक्टेड होते हैं, आपके क्यू कार्ड से रिलेटेड. एंड दीज क्वेश्चंस दे आर मोर एब्स्ट्रैक्ट. ये मोर डिटेल्ड होते हैं, मोर स्पेक्युलेटेड होते हैं, मोर ओपिनियटेड बेस्ड होते हैं. सो इन दिस सेशन यू हैव टू टॉक for 4 to 5 minutes. That means this session, this particular part lasts for around 4 to 5 minutes. And it depends on the examiner that how many number of questions he's going to ask in this part 3. Clear everyone till here? Now let's look at Yes, ma'am. introduction part in detail. Part 1, introduction in detail. As I told you,
Part 1, as I told you, it is for 4 to 5 minutes. Now, जब भी ये सेशन आपका स्टार्ट होता है, part 1, examiner will ask you to state your name and show your identification. जैसे ही आप अपने एग्जामिनर रूम में, एग्जामिनर हॉल में जाते हो, एंटर करते हो, फर्स्ट थिंग जो एग्जामिनर आपसे part 1 स्टार्ट होने पर पूछता है, दैट इज योर नेम, कि आपका नेम क्या है. एंड ही विल आस्क यू योर आइडेंटिफिकेशन, आपके पास कुछ आइडेंटिटी प्रूफ. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कैरी देयर पासपोर्ट, विच इज वेरी मैंडेटरी, जो आपको लेके जाना होता है. नेक्स्ट ही विल बी आस्क्ड जनरल क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ. आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वेयर यू लिव, व्हाट आर यू करंटली डूइंग, आप वर्किंग हो या आप स्टडिंग हो. इट्स योर चॉइस. ठीक है, आपको वर्किंग हो या आप स्टडिंग हो, ये आपको बताना है. देन दे विल बी आस्क्ड सम क्वेश्चंस, फिर आपसे कुछ फेमिलियर टॉपिक्स पूछे जाते हैं अबाउट द म्यूजिक यू लाइक, कुकिंग, आपको कुकिंग पसंद है या नहीं, वेदर से रिलेटेड, मूवीज से रिलेटेड. सो ऑल दीज जनरल टॉपिक्स, 1 to 2 टॉपिक्स आपके कहाँ कवर होते हैं, part 1. नाउ हियर एग्जामिनर विल आस्क स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस. उनके पास एक स्क्रिप्ट रेडी होती है. यू विल सी, जब आप टेस्ट देते हो तो एक पेपर होता है, पेन होता है, एक स्क्रिप्ट रेडी होती है. एंड विल लिसन टू योर आंसर. आपके आंसर, वो क्वेश्चंस पुट करेंगे, आपके आंसर्स को लिसन करेंगे, प्रॉम्प्ट करेंगे आपको. अगर आपने आंसर शॉर्ट दिया तो वो आपको बोलेंगे टू एक्सटेंड योर आंसर. और कैसे एक्सटेंड करने के लिए बोलेंगे, बाय आस्किंग क्वेश्चंस, व्हाई एंड व्हाई नॉट. राइट. सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा, डू यू लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एंड आपने बोला यस ऑफ कोर्स आई लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बट आपने उसे एक्सटेंड नहीं किया. तो he will ask, why do you like green leafy vegetables? और why don't you like green leafy vegetables? अगर आपका आंसर शॉर्ट होगा तो वो आपको प्रॉम्प्ट करेंगे एक्सटेंड करने के लिए अपने आंसर को. राइट. दिस पार्ट ऑफ टेस्ट ऑल्सो फॉलो अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट. एक क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट होता है जिसको वो फॉलो करते हैं, चेक करने के लिए आपके ओपिनियन, आपकी इंफॉर्मेशन ऑन एवरीडे टॉपिक. राइट, बिकॉज दीज आर ऑल फेमिलियर वन. So you can see here part 1 के टॉपिक्स. इट्स अबाउट होम टाउन और विलेज. सबसे पहले आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपका नेम पूछने के बाद ही विल आस्क यू अबाउट समथिंग रिलेटेड टू होम टाउन और विलेज. व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इट, व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर टाउन एंड विलेज, what kind of jobs do the people in your town or village do, would you say it's a good place to live, why. So they will ask you such questions, right? They will ask you about accommodation also. Tell me about the kind of accommodation you live in. How long have you lived there? What do you like about living there? What sort of accommodation would you like to live in? So there are 2 topics which is covered in part 1. First is about your hometown and village, and second is about the accommodation. Okay. Okay. Now let me ask you some questions here. Anyone who wants to answer, they can raise their hand. Okay. So I'm gonna ask one question about hometown or village. Okay. Let's talk about your hometown and village. What kind of place is it? Yes. Anyone who wants to answer this question? It's a general practice going on. I'm asking about the hometown. What kind of place is it? Yes. Anyone who would like to answer this? Yes, ma'am. Yes, Komal, please. My hometown is located in VPO, Tarantan district in Tarantan. It is the north part of India, state of Punjab. Mm-hmm. Yes, correct. Anybody else? Yes, anyone else? No?
Okay, so you can talk here for 1 to 2 sentences or more than two, but not exceeding the 3 sentences. That it's a quite a small place, it's very quiet, and how many kilometers away from this place you want to put a landmark, right? And you can also talk about some of the popularity of your hometown, because the question is, what kind of place is it? कैसा place है आपका hometown, right? Okay, next question. What's the most interesting part of this village? What's the most interesting part of your town or village? Anyone who would like to answer? Most interesting part बताना है आपको अपने town का. Yes, anyone? Yes, Baljinder, Yes, ma'am. Surbhi, Kashav, Deepika. Yes. And my hometown is very famous for its handloom business, and majority of the people around the city like to explore their business around the world. Hmm. Correct. But need to be little fluent, no pauses, no hesitation. Okay, when you speak. Okay. Next question. What kind of jobs do people in the village do? Yes, anyone. What kind of jobs do people in the village do? Anyone? So you can talk here. We have some farmers as well as the people who work as here like bankers or journalists, है ना? फार्म विलेज में क्या क्या काम होता है आप वो सब बता सकते हो कि फार्मर्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, right? There are different fields, so you can talk about all the kinds of job. Okay, next question. Would you say it's a good place to live? Yes, anyone? Would you say it's a good place to live? So you can talk here. Yes, absolutely. It's a very quiet place. People are more friendly here than the town. And I would say it's a good place to live. And if you want to add on something, you can add according to the place you're living in, right? Some of the features of your place. Similarly, they'll ask you some questions about your accommodation also, because there are two topics. So two topics will be covered here in the first part. Clear, everyone? And you have to answer in 1 to 2 sentences. Second round is your long turn. Long turn is called as Q card topic. Now, this part is for 3 to 4 minutes. Once the part one is over, examiner will give you a topic. Now, you have to talk about it for 2 minutes. Now, topic will be handed to you on a card. आपको कार्ड के ऊपर एक टॉपिक मिलेगा, आपको पीस ऑफ पेपर मिलेगा एंड पेंसिल मिलेगा सो दैट यू कैन मेक नोट्स. 1 minute विल बी गिवन टू प्रिपेयर. तो 1 minute में जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो आप उस पीस ऑफ पेपर पे नोट्स बना के कर सकते हो. ऑन द कार्ड आपको एक स्पीकिंग प्रॉम्प्ट दिखेगा, कुछ पॉइंट्स दिखेंगे जो आपको कवर करने हैं अपनी टॉक में, राइट? एंड सी इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको वो सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, बिकॉज वहां पे मेंशन होता है यू शुड से, राइट? सो एग्जैक्टली 1 minute का टाइम होता है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए एंड नोट्स बनाने के लिए बिफोर यू स्पीक. एग्जामिनर टाइमर का यूज करते हैं, दैट मीन्स आपको एग्जैक्ट 1 minute मिलेगा, नॉट लेस देन दैट, नॉट मोर देन दैट. तो जैसे ही आपका टाइम अप होगा, एग्जामिनर विल टेल यू एंड ही विल आस्क यू टू स्टार्ट योर टॉक, कि अब आप बोलना स्टार्ट कर सकते हो. एंड ही विल स्टॉप यू आफ्टर 2 minutes, जब आपके 2 minutes ओवर हो जाएंगे. सो जो पॉइंट्स आपको टास्क कार्ड पे दिए हैं वो आपको हेल्प करेंगे कि आपको क्या बोलना है. एंड यू शुड ट्राई टू कीप टॉकिंग फॉर फुल 2 minutes. सो इट इज एडवाइजेबल कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो स्पीकिंग पार्ट 2 को, तब आप कंप्लीट 2 minutes के लिए प्रिपेयर करो. यू शुड बी एबल टू टॉक फॉर 2 minutes, नॉट लेस देन 2 minutes, राइट? Now this part of test, it checks your ability कि आप at a length speak कर सकते हो नहीं, because part 1 में आपको कुछ sentences में 1 to 2 sentences में आंसर देना है, बट यहाँ पर क्यू कार्ड में आपको at a length, that means continuous 2 minutes तक speak करना है. So आपकी ability यहाँ check की जाती है that क्या ये student able to speak कर पाता है for continuous 2 minutes और not, और वो भी particular topic पे using the appropriate language
organizing the ideas in a logical way or not, right? So यहाँ पे आप अपना own experience भी use कर सकते हो topic का to complete your cue card, right? Now you can have the cue card here, a sample task. Describe something which is very important to you. आपको एक चीज बतानी है जो बहुत important है आपके लिए, जिसे आपने own करा है, जो आपकी है. Where you got it from, right? How long you had it, what you use it for, and explain why it is important to you. So this is your cue card topic. You have to talk about it for 1 to 2 minutes. 1 minute to think about it, and then next 2 minutes to talk about it. 1 minute में you have to make notes. आप अपनी wish से जो notes चाहे बना सकते हो, and then in the next 2 minutes you have to use that notes and you have to speak about it. Then comes your rounding off question. जैसे ही आपका cue card you talked about for 2 minutes. Now examiner will ask you 2 round of questions, right? To end your cue card topic. Now once that 1 minute is over, he will ask you that now you can speak. Anybody who wants to try this cue card topic? Yes, please. Anyone who want to give a try? No? Can I try? Yes, Kashyap, why not? You can try. Mm, I have so many things which are important for me, but here I would like to speak about my mobile phone. It is very important for me because I bought this last year from Dubai. It is 14 Pro Max. I use it. It's helped me so much in my day-to-day life. For example, I start my day with alarm. Well, it's very helpful me. It's very helpful for me. It's helped me to connect with my friends with social media sites. It's also I also use it. It's like as an entertainment. I watch movies, songs on it. As I am a professional truck driver, so I also use it on my logbook, and I also use this for my studies, sometime on online classes. Yes. So that is the thing which is very important for me. Only few seconds, like 10 seconds were left, but that was good that you have tried. See, if you're not gonna try, I would say that's a disadvantage for you, right? But please try to speak. Though there were so errors when you were speaking, but still give a try so that that hesitations goes away. Because you were speaking also there was repetition. There were no new idea and the organization was not there. But still, that's good if you are trying. Now let's talk about part 3. Now part 3, as I told you, it's for 4 to 5 minutes. Now this topic, this session will be about expressing and justifying your opinion. The difficulty level gets on increasing from part 2 to 3 now. Now here examiner wants you to speak more in detail manner. आपको यहाँ एक्सप्रेस ज्यादा करना है, ओपिनियन दो, एनालाइज करो, डिस्कस करो, स्पेकुलेट करो. वॉट एवर योर क्वेश्चन इज, यू हैव टू गो इन डेप्थ. आपको यहाँ पे 3 to 4 सेंटेंसेस में भी आंसर देना है और मोर देन 4 भी देना है. इट्स अप टू यू. As much you can extend your answer. Now, suppose if you're long term, that means if your cue card was about beautiful place to visit in your city,
Then this section might be talking about beautiful places. And the first question can be about, do you think it's important to maintain beautiful places in your city? राइट सो यहाँ पे आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू थिंक कि क्या हमें मेंटेन करना चाहिए ब्यूटीफुल प्लेसेस को सिटी में? नाउ इट्स अप टू यू कि आप वो कैसे अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो. देयर इज नो जजमेंट कि आपका आंसर कोई भी रॉन्ग या राइट होगा. नो, बट यस यू हैव टू टॉक अबाउट इट. इस सेक्शन में आपको यू हैव टू स्पीक मोर. Examiner will speak more and you have to speak more so that you can justify your opinion. That are you able to communicate or not as compared to the personal topic, because part 1 personal होता है, आपके बारे में पूछा जाता है, आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाता है, आपके लाइक्स डिसलाइक. पार्ट 2 इज ऑल्सो काइंड ऑफ पर्सनल बिकॉज आपने वो एक्सपीरियंस करा है या नहीं करा. बट द थिंग इज दैट्स अ वेरी फेमिलियर टॉपिक. But this is about something justifying the opinion, going in depth and checking your ability कि आप range of issues को discuss कर पा रहे हो connected to the general topic, right? General topic से related होता है. Now see the questions here. What kind of things give status to people in your country? Have things changed since your parents' time? So that means आपको अपने parents के time और अब के time में क्या करना है, difference बताना है, कितना change हुआ है. Then talk about advertising. Do you think advertising influence what people buy? क्या आपको लगता है advertising influence करती है लोगों को? So this is more general, not personal questions. Now let's talk about speaking evaluation कि आपकी speaking कैसे evaluate होती है, आपको scores कैसे मिलते हैं. Speaking band descriptors is the assessment criteria. ये एक assessment criteria है जिसे examiner use करता है to assess your speaking performance. Band descriptors same होते हैं for both, as I told you, academic and general के लिए. And the band descriptors are into 4 categories. ये 4 categories में divided है. First one is fluency and coherence. Second is lexical resources. Third one is grammatical range and accuracy. And the fourth is pronunciation. Now let's look in detail. Now band descriptors, they are ranging from 0 to 9. Right? आपकी overall performance को check किया जाता है on the basis of these 4 categories and तब आपको एक band score assign किया जाता है. और इन 4 कैटेगरीज के बेसिस पे ही आपको एक एक स्कोर मिलता है एंड देन वो कंप्लीट स्कोर डिवाइड हो जाता है आपका स्पीकिंग का. सो वेरी फर्स्ट इज फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस. फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस क्या होता है? सो फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस मींस एग्जामिनर विल लो कि आप कितने फ्लुएंट हो, कितने फ्लुएंटली आप अपनी स्पीकिंग को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो. आर यू एबल टू कीप स्पीकिंग या आप कुछ हेजिटेट करते हो, कुछ पॉजेज लेते हो, राइट? अगर आप हेजिटेशन करते हो या सेल्फ करेक्शन करते हो या रिपीट करते हो, ये सब यहाँ पर चेक किया जाता है. आपने कितनी बार सेल्फ करेक्ट करा? सेल्फ करेक्ट मतलब आपने कुछ बोला, आपको लगा आपने गलत बोला एंड देन आपने उसको दोबारा करेक्ट करके बोला, दैट इज सेल्फ करेक्ट. हेजिटेट करना, हेजिटेशन आपकी वॉइस में क्लियरली मेंशन होती है अगर आप उसे करते हो. रिपीट कितनी बार, अपने वर्ड्स को कितनी बार रिपीट कर रहे हो, कौन से सेंटेंसेस को रिपीट कर रहे हो. सो ऑल दिस फ्लुएंसी विल चेक, यहाँ पे सब इवैल्युएट होता है. कोहेरेंस मीन्स आप कितने कोहेरेंट हो. कोहेरेंट मतलब आपके वर्ड्स, आपके आइडियाज, आपके थॉट्स का फ्लो कैसा है, आप उन्हें कितना ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो, रेंज ऑफ वर्ड्स क्या यूज कर रहे हो, फ्रेजेस को क्या यूज कर रहे हो कनेक्ट करने के लिए स्टेटमेंट को. और जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रहे हो तो आपने उसको कनेक्ट कैसे करा है. फॉर एग्जाम्पल कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स, first, second, next, then another thing, well, I believe. These are all the connecting words, right? And we have already done these connecting words before too, right? So fluency and coherence, दोनों में आपको इन चीजों को keep in mind करना है so that you will never lose your band score.
नेक्स्ट इज लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या होता है? आपकी एबिलिटी टू चेक दैट आर यू एबल टू यूज गुड वोकैबुलरी और नॉट, मतलब राइट वर्ड्स और फ्रेजेस को आप यूज कर रहे हो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए या नहीं। Examiner will consider the kinds of word you use, whether they make your ideas clear. Sometimes some student they use uncommon vocabulary, but they are not sure of the vocabulary. वो vocabulary use करते हैं, but not in the right context. So words understandable भी होने चाहिए, appropriate होने चाहिए, and relevant to the topic होने चाहिए. You can't use irrelevant vocabulary. राइट आपको राइट वर्ड फॉर्म भी यूज करने आने चाहिए। दैट मीन्स कब आपको बोर्ड यूज करना है, कब आपको बोरिंग यूज करना है, यू शुड बी अवेयर। आपको राइट वर्ड फॉर्म आनी चाहिए एंड राइट वर्ड्स टुगेदर, दैट मीन्स कॉलोकेशन। कॉलोकेशंस का देयर इज अ टॉपिक एंड कॉलोकेशंस आर ऑलरेडी देयर इन द एप्लीकेशन। प्लीज गो थ्रू द कॉलोकेशंस। कॉलोकेशंस आर समथिंग व्हिच गो हैंड इन हैंड, right, which are pair up together. Next is paraphrasing, idiomatic language and less common language. ये आपको यूज करनी आनी चाहिए if you want to score more than band 7. If you are using a normal language, and I would say not an idiomatic language, or you are using the less, or you are using the common language, so आप band 6 or 6.5 तक ही stuck रहते हो. But if you really want to score band 7 above, आपको paraphrasing आनी चाहिए. You can use different kinds of words formation, right? Next is grammatical range and accuracy. Grammatical range and accuracy, with the word itself, your grammar will be evaluated, right? यहाँ पे आपकी grammar evaluate होती है. That are you able to produce your speech? जो आप बोल रहे हो वो grammatically correct है या नहीं? Are you using the simple or complex structure or not? कैसे sentence structures आप use कर रहे हो? आपकी वेरिएशन जब आप बोलते हो, प्रॉपर यूज ऑफ टेंसेस, मिक्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सो व्हाट डू यू थिंक कश्यप ने कैसे सेंटेंसेस यूज करे थे? वाज इट सिंपल और कॉम्प्लेक्स? एनीवन हु कैन जज? Simple. He was using simple sentences. So you have Yes. to use a mix of simple and complex, right? You have to show your examiner that you can use a range of complex structure अगर आपको higher band score करना है तो, राइट? नंबर ऑफ एरर्स आपके यहाँ पे इवेलुएट होते हैं, सो ट्राई एंड लिमिट द नंबर ऑफ एरर्स. जैसे कश्यप ने लॉट्स ऑफ टाइम आई ऑल्सो रेपिटिशन, राइट? सो यू कांट रिपीट योर सेंटेंसेस. आपके एरर्स इवेलुएट होंगे, सो मेक श्योर कि आपको अपने सेल्फ इवेलुएशन करो. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, मेक अ यूज ऑफ एप्लीकेशन. एप्लीकेशन पे आप टेस्ट दो सो दैट यू कम टू नो अबाउट कि आपके एरर्स क्या हैं, राइट? कितने सेंटेंसेस आपके एक्यूरेट हैं एंड हाउ मेनी आर इनएक्यूरेट. नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन. नाउ प्रोनाउंसिएशन मींस देयर आर डिफरेंट फीचर्स. प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि आप प्रोनाउंस कैसे कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो. बोलने का भी एक तरीका होता है. दैट मीन्स आप कौन से वर्ड्स पे स्ट्रेस, आपकी इंटोनेशन कैसी है, आपकी रिदम कैसी है. दैट मीन्स आपकी स्पीच कैसी है, कितना आप फास्ट बोलते हो, कितना आप स्लो बोलते हो, एक्सप्रेशंस आपके कैसे हैं. ईच एंड एवरीथिंग विल बी इवैल्यूएटेड हियर. एग्जामिनर विल बी लिसनिंग यू, राइट? और कितना इजी है उनके लिए आपको समझना जो आप बोल रहे हो, कितना क्लियरली बोल रहे हो, कितना करेक्टली बोल रहे हो, वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो. ऑल दीज थिंग्स विल बी इवैल्यूएटेड. उनको स्ट्रेस लग रहा है समझने में, इंटोनेशन आपकी कैसी है, आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे एम्फसाइज करा या नहीं, यूज ऑफ स्ट्रेस करा कि नहीं, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज पे जब आप अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो. हाउएवर, बट कुछ भी कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट है तो हाउ यू आर पुटिंग दैट स्ट्रेस, एम्फोसाइज कैसे कर रहे हो, दे विल लिसन आउट फॉर प्रोनाउंसिएशन एरर. सो वो ये सब चीज वहां पे इवैल्यूएट करते हैं एग्जामिनर, आपके एरर्स को चेक करते हैं जब भी आप कोई वर्ड्स बोलते हो. क्लियर एवरीवन?
So these band descriptors, these are very important for you कि आप इनको समझो, and you should keep in mind all these things. Yes, everyone, clear till here? So I hope now band descriptors and the speaking part, that means the guide to IELTS speaking, what is IELTS speaking and what are the three parts of IELTS speaking, is clear to you.